Zamir Universal. First, and look at that team, and I don't know the qualification of that team you have, who dares look at this documentary and finds it that there should be a copyright strike. Now I'm coming to the point about another liar, which is a war criminal, and that's Donald and Natenyahu. And look at the speech he made. He found digging up there, which we had no right to dig in the deep depth of Jerusalem, the historic city, thousands of years old. And the guy starts the history and uses his oration. And the funny thing is that the people sitting in front of him included Marco Rubio. You can imagine the level of the education and knowledge of history of those people when they heard him, that the tablet is found, and he said, oh, we had good relations with Turkey, and I invited him on coffee, and I said, please take all which we have. That is the proof. And it starts with Isaac. Isaac was son of Abraham. Damn it, the Judaism started from Prophet Moses, when he got them freed from Pharaoh. That's the time that this, religion started, not before that. And if you want to think that the Abraham was a Muslim, he had nothing to do with Judaism. And he had two wives, and from Sarah was Isaac, and from, the other wife, which he married later, had Ishmael. Now, Ishmael's descendant was Prophet Muhammad, peace be upon him, who completed the religion. The piecemeal religions before Islam were Christianity, but Judaism, and even you can go all the way up to Adam, Prophet Adam, Prophet Noah, and then Prophet Abraham. Even look at the prayer, look at the things, the belief, in oneness of God, and the prayers. At that time, there were only 2 rakat of namaz, not 5 times a day, which later on Prophet Muhammad, peace be upon him, taught to Islam. It is the hatred towards Islam, and he, for his help, he just lies to the Christians. He says that it is Judeo-Christian, that what that little tablet of stone means when you take the history from the middle where it suits you, and you do not go back to either Prophet Adam or Prophet Noah, or Prophet, at least Prophet Abraham and Prophet Moses. So unless you do that, and that's the prophet where the Torah was revealed, and that's the book you supposed to follow in synagogues, but you don't, because Torah was completely changed and missing for thousands of years, and all you have Talmud, which is nothing but a collection of the sermons given by various rabbi, and you can imagine that the built-in, the bias built-in, how they changed that. That's the book now which is being used in most of the synagogues of, Jewish, where they practice their Jewish religion. And even there, you see there is group of the real who follow the Torah are Hardis, and you see how they hate they do not want a state, they do not want to fight. And look at this, arena cult of the terrorists, war criminals, baby killers, and see what, and then they have adopted, father, another immoral, another mad king. Now it suits them that he has now ditched them, and he has thrown them because he is a businessman, and now when he cannot spare trillions of dollars investment and lie to all the Muslim states and the Arabs, and then support this and hold him like a illegitimate child and a little small baby in his lap. He's thrown him, and on Monday everybody may have hopes. I can assure you that this liar, he will, like a lizard of the desert, will change his colors, and he will, unless there is a world war, unless there is a complete bloodshed, unless everyone in Israel is completely destroyed, killed. I think it's up to Israelis to rise to the occasion and get rid of this man and live peacefully with the Muslims as they have lived for centuries. And who allowed them to even enter in Jerusalem and pray was the Prophet's companion, Hazrat Umar. And he let them. Even the Romans didn't want them, the Christians, nobody wanted them there. And look at the
reward they have given. And when they came barefooted with naked bellies and starved as refugees from Poland and other parts of Eastern Europe, look what they have done to them. With 5,000 people, now they control almost 95, and now threatening day and night, walking through the most sacred mosque of Al-Aqsa with the shoes on, and threatening them to annex the West Bank, and so that the complete removal of Palestine from the world map. Unfortunately, the man proposes and God disposes. That isn't what's going to happen. And you can see one by one, more than 150 countries recognize the state of Palestine, and that's what will remain, and that historically was there, and it will be restored. All these immigrants, the settlers, they can voluntarily leave, and those who practice Torah and they are religious Jews, they are जो वो मुकम्मल तौर पर हासिल की जाए। मिसाल के तौर पे ये इसराइली सदर देखिए, ये स्पेशल तस्वीर उतरवाई गई है, जो सारे पादरी हैं उनको बुलाकर सिर्फ क्या कि भाई हम क्रिश्चियंस के साथ, हम जो भी उनकी लॉबी, मैंने आपको सारी तफसील बताई है, ये स्पेशल तस्वीर उतरवा कर जारी की गई है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, फिर आज चूंकि क्रिसमस मनाया जा रहा है, तो क्रिसमस के मौके पर जो पैगाम जारी किया है नेतन्याहू ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी कुछ चीजें आप तक पहुंचाना जरूरी है। और फिर इसके जवाब में जो ईसाइयों के पेशवा हैं उनका जवाब इसराइल को आया, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले नेतन्याहू का यह बयान देखिए। वी आर फेसिंग monsters who murdered children in front of their parents and parents in front of their children, who raped and beheaded women, who burned babies alive, who took babies hostages. This is a battle not only of Israeli against these barbarianism, it's a battle of civilization against barbarianism. And I know this is what we have your support. I want to thank you for your support. I want to thank you for your prayers. ठीक है ना, ये कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है। इसमें दो चीजें, शायद ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मेरा मकसद है कि आप तक तमाम चीजें जरूर पहुंचनी चाहिए। अच्छा, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो उन्होंने पहले पैराग्राफ में कहा है कि ये मॉन्स्टर्स हैं और इन्होंने बेहिडेड किया बेबीज को, और वालिदैन के सामने बच्चों को किया, बच्चों के सामने वालिदैन को, फलां फलां। ठीक है, अच्छा, इसी बुनियाद पर इन्होंने जंग छेड़ी थी। ठीक है ना। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो रिवर्स हो चुकी हैं। उनका अपना मीडिया से लेकर, CNN से लेकर, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, बरतानवी मीडिया से लेकर, सब ने ये एक्सपोज किया है कि ये ऐसा तो कोई मामला हुआ ही नहीं था। यानी बच्चों के साथ, औरतों के साथ, मतलब जो ये क्लेम करते हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर सामने आ चुकी है। लेकिन आज फिर वो वही बात कर रहे हैं जिस बुनियाद पर इन्होंने जंग छेड़ी, और इनकी ये बातें झूठी साबित हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम जंग लड़ रहे हैं बारबेरियनिज्म, ठीक है ना, बारबेरियनिज्म वर्सेस सिविलाइजेशन। हम तहजीब की जंग लड़ रहे हैं, हम तुम्हारी सिविलाइजेशन, ये यूरोप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हारी तहजीब है, ठीक है ना, जो इस वक्त दुनिया पर रूल कर रही है, उसको सबसे बड़ा खतरा लाक हो गया है। तो हम दरअसल ये तुम्हारी जंग लड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये घटिया प्रोपेगेंडा करके, तुम्हें कोई इंसानियत का पता भी है, तुम्हें इंसानियत, कोई तहजीब के नाम के लफ्ज तुम्हारी डिक्शनरी में है भी सही, कोई इंसानियत नाम का डिक्शनरी में तुम्हारे लफ्ज है भी सही। यानी दुनिया भर के इदारे ये कह रहे हैं कि जितना जुल्म यहां गजा में हो चुका है, इतना वर्ल्ड वार 2 में नहीं हुआ। और ये तो आपको 5% पता चला है, 5%। अभी तो जब ये जंग बंद होगी, मीडिया वहां पर जाएगा, तब आपको हकायक पता चलेंगे। यानी एक खबर आती है कि एक बम गिरा, 200 लोग शहीद हो गए। वो कौन है 200 लोग? एक खबर आती है कि एक बम गिरा और एक फैमिली के 76 लोग शहीद हो गए। तो कहां है उनकी कहानियां? क्या उनकी कहानियां आप तक पहुंची हैं? वो जो आज 8,000 से ज्यादा लोग मलबे तले दबे हैं, क्या उनकी कहानियां आप तक पहुंची हैं? तो जब ये आप तक पहुंचेंगी तो दुनिया को पता चलेगा कि यहां पर कितना जुल्म ढाया जा चुका है। अभी तक दुनिया को नहीं पता कि गजा में दरअसल हुआ क्या है। ये इतना भयानक है, इतना भयानक है कि तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक है ना, ये इस वक्त कहा जा रहा है। तो तुम्हें क्या पता इंसानियत क्या होती है और तहजीब क्या होती है? लेकिन ये जो इनके स्याह चेहरे हैं ना, उनको इस प्रोपेगेंडा के जरिए छुपाना चाह रहे हैं। जो असल ये वहशियाना जो काम इन्होंने किया, जो खुद ये घटिया और बुज़दिल तरीन और जालिम और फिरौनों को भी पीछे छोड़ गए हैं, तो ये इस चीज को छुपाने के लिए आज यूरोप को साथ मिलाना चाह रहे हैं। लेकिन अब वहां पर अवाम को समझ आ गई है, अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सबको ये बात समझ आ रहा है। अब देखें ना, अमेरिका में जो सर्वे आया, 51% अमेरिकन यूथ ने कहा कि इसराइल को तो खत्म ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई मामूली चीज है? तो ये जो है ना, ये अब इनका प्रोपेगेंडा जो है इस दुनिया में अब कामयाब होने वाला नहीं है। जो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया, जो सोशल मीडिया ने जो काम कर दिखाया, जो दुनिया तक पहुंचाया इनकी हकीकत, तो ये अब इनका प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। अच्छा, अब इसके जवाब में आज जो पोप फ्रांसिस ने तकरीर की है, यानी जो ईसाइयों के सबसे बड़े पेशवा हैं, जो उन्होंने क्रिसमस की तकरीर की है, वो भी इस जंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेतन्याहू का मैसेज है उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि इसराइल एक दहशतगर्द स्टेट है। अगर स्कूलों पर हमला हो, अगर अस्पतालों पर हो, अगर चर्च पर हो, अगर मसाजिद पर हो, तो क्या इसे हम दहशतगर्दी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। ये पोप फ्रांसिस यानी ईसाइयों का सबसे बड़ा पेशवा कह चुका है। और आज जो उन्होंने स्पीच की है क्रिसमस की, ये उनके कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा। इट शुड बी टॉक अबाउट
about and written about so as to bring to the light of interest and profits that move the puppet strings of war. How can we even speak of peace when arms productions, sales and trade are on the rise? Merchants of death कंट्रोलिंग द वॉर. ठीक है, अब ये बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है. उन्होंने कहा कि जो मौत के सौदागर हैं, वो जंगों से जो मुनाफा कमाने वाले हैं, वो जंग की तारें खींच रहे हैं. मौत के सौदागर और जंगों से मुनाफा कमाने वाले इस वक्त जंग की तारें खींच रहे हैं. और इस वक्त जो आर्म्स यानी असले और हथियारों की सेल है वो सबसे उरूज पर पहुंची हुई है और जंग की तारें खींची जा रही हैं. तो हम पीस की बात भी कैसे कर सकते हैं? तो अब मुझे बताइए, तो ये जो असलिया कंपनीज हैं जिनको वो मुखातिब करके कह रहे हैं, क्या वो मज़ामती तहरीक को हथियार दे रही हैं? ठीक है, क्या मज़ामती तहरीक जंग छेड़ रही है या मज़ामती तहरीक जंग बंदी नहीं करना चाहती? तो जंग कौन छेड़ रहा है और ये असलिया बरदार कंपनियां किसको असलिया फराम कर रही हैं? और जिस पर पोप फ्रांसिस कह रहा है कि ये जंग से मुनाफा कमाना चाहते हैं और पूरी ह्यूमैनिटी की जो पीस है वो इन्होंने दाव पर लगा दिया. तो वो किसको मुखातिब कर रहे हैं? वो आपको समझ आना चाहिए कि वो इसराइल को मुखातिब कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ही के साथ लिंक वो सारी कंपनीज हैं जो जंगों से मुनाफा कमाती हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में जंगें फैलाई हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में फसादात फैलाए हैं. ठीक है ना? तो ये एक अहम तरीन चीज है जो कि पोप फ्रांसिस ने इनको जवाब दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था ताकि आपको पता चले. और ये वो इंफॉर्मेशन है जो बहुत रेयर होती है, जो आप तक यकीनन नहीं पहुंची होगी, तो इसलिए यह हकायक आप तक पहुंचाने जरूरत है. देखें, एक बात मेरे लिख लें, अगर यूरोप इनसे पीछे हट जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो हट रहा है क्योंकि अवाम को समझ आ गई ना, अवाम पीछे हट गए, तो इसराइल कायम नहीं रह सकता. इसराइल कब्जा माफिया है, जैसे कायद आज़म ने कहा था कि ये मगरिब का नाजायज बच्चा है. ठीक है ना? तो जब ये मगरिब उससे पीछे हट जाएगा तो ये कब्जा कायम नहीं रह सकता. ठीक है, तो ये कुछ अहम चीजें आप तक पहुंचाइए. अब जरा गजा की जंग पर लिए चलते हैं और वहां पर जो बिग अपडेट्स आई हैं वो सिर्फ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पूरी जंग का अंदाजा हो जाए. नाज़रीन, जो बड़ी अपडेट्स हैं वो पहले तो आपको बताते हैं कि जो रॉकेट्स फायर किए गए, रॉकेट्स की बारिश की गई है. यानी मज़ामती तहरीक ये कह रही है, बयान देखिए कि वी रेन्ड मिसाइल्स अटैक ऑन तेल अवीव. अब रेन्ड बकायदा उन्होंने लिखा है कि अब ये जो बारिश होती है ये 10-15 मिसाइलों से तो नहीं होती, 20-25 से भी नहीं होती, ये सैकड़ों जब मिसाइल और रॉकेट्स आप फायर करते हैं तो देन आप कह सकते हैं कि हमने बारिश की है. तो इसराइली मीडिया भी बता रहा है कि तेल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए हैं और बड़ी तबाही की अब वहां पर रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं. तो ये बहुत ज्यादा जोरदार ये हमला किया गया है. तो ये भी इसराइल की एक शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है कि 80 डेज ऑलमोस्ट वॉर को हो चुके हैं और 80 डेज में तुम उनकी ये फायर कैपेसिटी नहीं तोड़ सके, उनकी ये मिसाइल कैपेसिटी को नहीं तोड़ सके. वो जब चाह रहे हैं निशाना बना रहे हैं, तेल अवीव से लेकर सेंट्रल इसराइल एंड देन साउथ इसराइल, जहां पर वो चाहते हैं निशाना बना रहे हैं. तो इट्स मीन कि उनकी 1% भी कैपेबिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा है. ठीक हो गया? अब मैं आपके सामने कुछ आज नक्शा भी लेकर आया हूं ताकि आपको जंग की और क्लैरिटी हो. आप मैप देखें और ये जो ग्रीन एरिया है ये सारा, ये साउथ का मैं दिखा रहा हूं, ग्रीन एरिया सारा जो है यहां पर मज़ामती तहरीक का कंट्रोल है. और इससे आप अंदाजा लगाइए कि कब से इन्होंने साउथ में जंग छेड़ी और पूरा जोर लगाया है. तो ये कई हफ्तों से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके, 1 इंच भी. ठीक है, इन्होंने इधर कोस्टल लाइन वाली साइड से भी इनकी नेवी ने अंदर घुसने की कोशिश की, फिर रफा वाली साइड से भी ये अंदर जाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन मुकम्मल नाकाम रहे. तो आप देख लें कि पूरा साउथ जो है वो पूरा, यानी नॉर्थ तो है ही है, लेकिन इस वक्त जो ज्यादा जोरदार जंग चल रही है या इनका ज्यादा जोर है वो साउथ पर है. तो साउथ में आप देख लें कि पूरे का पूरा जो है वो मज़ामती तहरीक के कंट्रोल में. और जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है यहां पर इनकी आर्मी जरूर आई है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल फिर भी उनके पास नहीं है. यानी यहां पर उन्होंने पेनिट्रेट जरूर किया, लेकिन वो कितना है कोई इलाका है और यहां पर भी इनका कंट्रोल नहीं है. यहां पर आए एंड देन फिर यहां से भी उनको विड्रॉ करना पड़ा. तो कंट्रोल जो मुकम्मल है वो मज़ामती तहरीक के पास है और 1 इंच भी ना आगे बढ़ सके हैं ये और ना 1 इंच पर अपना क्लेम हासिल कर सके हैं. अब जरा आपको स्नाइपर्स के हवाले से अपडेट करते हैं. स्नाइपर्स के हवाले से नाज़रीन बड़ी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बड़ा शानदार इस जंग में किरदार निभाया है. और इससे पहले अगर हम पहला फेज देखें 49 डेज का, तो उसमें स्नाइपर्स का इतना रोल हमने नहीं देखा, लेकिन दूसरे फेज में हम देख रहे हैं कि वो कितना शानदार काम कर रहे हैं. और रोजाना वो बता रहे हैं कि आज उन्होंने कितने हलाक किए, आज कितने किए. और ये होल राइफल जो स्नाइपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो खुद बना रहे हैं. जो सुरंगों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वो वहां पर बनाई जा रही हैं राइफल्स, और उनकी जो गोलियां हैं वो भी मज़ामती तहरीक खुद बना रही है. ठीक है, तो रोजाना 8 से 10, 15 और जो ऑफिसर्स हैं और जो कमांडर्स हैं उनको मारने का जो खास मिशन है, टारगेट है, वो भी स्नाइपर्स को दिया जाता है. और इस टाइम तक 5 से 7 कमांडर जो है वो स्नाइपर्स ने हलाक किए हैं. तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट उनके सर पर है, क्योंकि स्नाइपर का एक भी गोली चलाना, एक एक गोली उसकी बड़ी माने रखती है. ये AK-47 नहीं है कि आपने एक ही दफा में जनाब इतनी गोलियां चला दी, उसकी एक एक गोली माने रखती है. ठीक है, तो रोजाना अगर वो 4-4, 5-5, 7-7 लोगों को भी हलाक करते हैं उनके ऑफिसर्स और सोल्जर्स को, तो ये बहुत ही मतलब बहुत कमाल मिशन वो कर रहे हैं. ठीक है, तो अब ये उनका बयान पहले आप देखिए
تمہارے الرٹ رہو, تمہارے سر ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں. یہ مزاحمتی تحریک نے سنائپرز کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے. اب اگلا بیان دیکھیے مزاحمتی تحریک کا. 6 سنائپر آپریشنز ور کیریڈ آؤٹ ٹارگیٹنگ انیمی سولجرز اینڈ دا ہیڈ کوارٹرز, فیلڈ کمانڈ رومز اینڈ ملٹری کنسنٹریشنز ور ڈسٹرائڈ ود مورٹار شیلز اینڈ شارٹ رینج میزائلز. وہ کہہ رہا ہے کہ سنائپرز نے تو 6 آپریشنز کیے اینڈ دین جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, کمانڈ روم ہیں اور ملٹری کنسنٹریشنز ہیں, ان کو ہم نے میزائلز اور مورٹار شیلز کے ساتھ نشانہ بنایا ہے. تو یہ بہت بڑے حملے مزاحمتی تحریک کی جانب سے کیے گئے. اب یہ ایک اور بہت بڑا بیان اور بہت بڑا انفارمیشن میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, جس میں اسرائیل خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ان کی پوری کی پوری جو بریگیڈز ہیں وہ اڑا کے رکھ دی گئی ہیں. اب یہ آپ پہلے بیان دیکھیے پھر میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے دا نہال بریگیڈ پیٹرول لاسٹ آلموسٹ آل آف اٹس لیڈرشپ while the 13th بٹالین آف گولانی بریگیڈ also suffered heavy losses. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو بریگیڈ ہوتی ہے نا ناظرین, یہ سب سے بڑی ہوتی ہے, یعنی بریگیڈ کے اندر بٹالین ہوتی ہیں, جیسا کہ یہ گولانی بریگیڈ کی 8-10 بٹالینز ہیں. تو یہ جو نہال بریگیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی ہے. اس کی تمام لیڈرشپ, اس کے تمام کمانڈرز, ڈپٹی کمانڈرز, آفیسرز, وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک بریگیڈ ہوتی ہے, اس کے اندر 8 سے 7 بٹالینز ہوتی ہیں اور ہر بٹالین کا الگ کمانڈر ہوتا ہے. ایک ٹاپ کمانڈر ہوتا ہے یعنی آپ کی پوری بریگیڈ کا, اینڈ دین ہر بٹالین کا کمانڈر ہوتا ہے. تو وہ تمام کی تمام لیڈرشپ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئی ہے. تو سوچئے یہ کتنا بڑا نقصان اور کتنا بڑا بھاری جو شکست ہوئی ہے, عبرتناک شکست اسرائیل کو ہوئی ہے, جس کی خود وہ جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا نا جیسے گولانی بریگیڈ کو جب یہاں سے وڈرا کیا گیا تو انہوں نے باہر نکل کر جشن منایا کہ چلیں ہماری تو جان بچی, یہ اتنی ایک بہادر فوج ہے. اب میں آپ کے سامنے 2-3 انتہائی امپورٹنٹ چیزیں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو جنگ کی کلیئرٹی کے حوالے سے پتہ چلے کہ بھائی اس وقت کس کا پلڑا بھاری ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا کے جو انالیسز ہے وہ بھی آپ تک کم پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ گارڈین کا پہلے آپ انالیسز دیکھیے, دنیا کا سب سے بڑا ادارہ, یہ امریکی نیوز چینل ہے, بہت بڑا مستند سمجھا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیے, اسرائیل حماس کے خلاف جنگ ہار رہا ہے لیکن نتن-یاہو اور ان کی حکومت اسے کبھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ گارڈین کہہ رہا ہے. اسرائیل کی بین الاقوامی ساکھ شدید, 20,000 سے زیادہ فلسطینیوں کے قتل, 50,000 زیادہ کے زخمی ہونے اور غزہ کے بیشتر حصے کی تباہی سے گر گئی ہے. سرکاری ہلاکتوں کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ, اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے میں 460 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک اور تقریباً 1900 سے زیادہ زخمی ہیں, لیکن دوسرے ذرائع زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو گارڈین بھی اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ جو اسرائیلی آرمی اپنا نقصان بتاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ جو دوسرے ذرائع بتا رہے ہیں اس میں یہ نقصان کئی گنا زیادہ ہے, اور یہ میل آپس میں نہیں کھاتا جو اسرائیل بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ان کی آرمی کلیم کرتی ہے اور حقائق اس سے مختلف ہیں. پھر اب ان کے ایک فارمر ہیڈ آف اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس, ان کا بیان آپ دیکھیے. دا وار گولز آر ان ریئلسٹک اینڈ ول اونلی اینڈ ود دا ریٹرن آف کڈنیپ پیپل. یہ ان کا ملٹری ہیڈ کہہ رہا ہے انٹیلیجنس کا کہ بھائی ہمارے جو گولز ہیں وہ ان ریئل ہیں, وہ غیر حقیقی ہیں, ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہاں پر کامیابی نہیں ہونے والی ہے. پھر ایک اور اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے کہ مزاحمتی تحریک اس وقت کتنی پاور میں ہے. تو یہ آپ دیکھیے, ان دا نیور اینڈنگ بیٹل آف لرننگ حماس شوز گریٹ پیشنس اینڈ ان دا فیلڈ اینڈ improves its fighting methods which has led to this rise in the number of dead and wounded among the ranks of the Israeli army. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے گریٹ پیشنس دکھایا اور پھر جو جدید جنگی صلاحیتیں ان کا مظاہرہ کیا, اسی لیے ہماری جو رینکس میں اتنی زیادہ تعداد میں نمبرز آف ڈیتھس اور وانڈیڈ ہوئے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ مزاحمتی تحریک نے اپنی انتہائی شاندار جو صلاحیت ہے وہ ہمیں شو کروائی ہے. اب آخر میں آپ کو ایجپٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں. ویڈیو شاید لمبی ہو رہی ہے لیکن مختصراً میں آپ کو ایجپٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں. بہت اہم ترین معلومات ایجپٹ کے حوالے سے ناظرین آئی ہیں. ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایجپٹ کی فوجیں جو ہیں وہ روانہ ہیں بارڈر کی طرف. اور اس میں مسئلہ کہاں پر پیدا ہوا ہے ناظرین؟ مسئلہ اس طرح پیدا ہوا ہے کہ ایجپٹ اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں جنگیں ہو چکی ہیں. تو جب لاسٹ 1973 میں جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر 1979 میں, تو وہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو امن معاہدہ کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان دونوں ملکوں میں جنگ نہیں ہوئی. اور اس میں ایک معاہدہ طے کیا گیا تھا جس میں جو یہ بارڈر ہے اسرائیل اور ایجپٹ کا, یہاں پر ایک بفر زون بنائی گئی تھی کہ یہاں پر نہ اسرائیلی فوج ہوگی نہ ہی مصری فوج ہوگی. تو اس کو فیلیڈیلفیا ایکسس کا نام دیا گیا تھا اس بفر زون کو. تو اب اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل چونکہ ہار رہا ہے تو اب وہ ادھر سے بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں سے بھی اندر گھسا جائے. تو وہ فیلیڈیلفیا ایکسس جو کہ بارڈر ایریا ہے جہاں پر یہ طے کیا گیا تھا, معاہدہ ہوا تھا 1979 میں کہ بھائی یہاں پر فوج ڈپلائی نہیں کی جائے گی, تو اسرائیل وہاں پر فوج ڈپلائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو اس پر معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے. مصر جو کہ مذاکرات کے ذریعے چیزیں حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اب اس نے کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم بغیر کسی وارننگ کے
बगैर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने कहा बगैर किसी वार्निंग के हम इसराइल पर हमला करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे, हम बगैर वार्निंग के हमला करेंगे। आपके सामने सबूत इसराइली मीडिया की जुबानी रखने जा रहा हूं। ये पहले आप देखिए कि इसराइली अखबार के मुताबिक मिस्र ने इसराइल को मरासला भेजा है कि हमारी सरहदें और फलस्तीनियों का सिनाई की तरफ इनखला हमारी रेड लाइन है, अगर इनको अबूर किया गया तो बगैर किसी वार्निंग के जवाब दिया जाएगा। फिर उनका एक और देखिए, Egypt informed Israel that the occupation of its borders and the influx of Palestinians into Sinai are red lines। ठीक है, तो वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों काम तुम लोगों ने किए, यहां पर फौज डिप्लॉय की और गजा के लोगों को इधर धकेलने की कोशिश की, तो फिर हम बगैर वार्निंग के हमला कर देंगे। और लेकिन मिस्र ने तैयारी कर दी, उनके जो फौज है वो सिनाई की तरफ, इस बॉर्डर की तरफ रवां दवा है, टैंक्स वहां पर पहुंचाई जा रही हैं, फोर्सेज हाई अलर्ट पर कर दी गई हैं, क्योंकि अब सूरत हाल एक तो एस्केलेट हो चुकी है और दूसरा जो जंगबंदी की चीजें चल रही थी अब उनका चांस नहीं बचा है। अब ये पता चल गया है कि जंग आगे बढ़ेगी, तो मिस्र को समझ आ गई है कि भाई अब ये तो हल निकल ही नहीं रहा। हालांकि मिस्र ने सबसे ज्यादा कोशिश की है कि अमन के जरिए मामला हल हो जाए। अभी ये जो लास्ट मुज़ाकरात हुए हैं वो भी मिस्र में हुए, लेकिन वो नाकाम रहे। तो अब मिस्र को समझ आ गई है कि भाई जंग तो चल रही है, जंग तो लंबा चलेगी और इसका नतीजा फिर ये निकलेगा। तो फिर यही बात मैंने आपको पहले भी बहुत बार कही है कि जॉर्डन और मिस्र को ना चाहते हुए भी इस जंग में आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लोकेशन इस तरह की है। तो ये उनकी कौमी सलामती का मसला बन जाएगा अगर वो इस चीज को फोर्स नहीं करते, इस चीज को फेस नहीं करते। तो ये नाज़रीन आम तरीन और ताज़ा तरीन। And we reject and condemn the actions of the occupying authority, master of Israel in the region, the latest of which is the brutal aggression against the sister state of यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर। Very welcome to stay. That's what's going to happen. 50 years contract with Egypt now cancelled. Nothing to do with Saudi Arabia. No normalization. And Pakistan, if you trust Pakistan, then imagine what they did to the Russians and what they did to the Americans and what the ISI did. Remember, they are only about 20 kilometers from, your border now. With their nukes, with their missiles, you can strike up to a distance of 3,000 to 4,000 kilometers, and you are only 20 miles away from them. So imagine what they will do. And they, at an umbrella, it is now there. If America can put the nukes in the, Scotland and or in other parts of the Europe, how come that the Pakistanis cannot do that? They have a defense pact with the, Saudi Arabia, and now here you are. But there was nothing like that either with Egypt or with Saudi Arabia, and soon you will see that the ambassador from UAE will be thrown out, and the Qatar has already, I think, severed relations with you. Both will spit on the Abraham Accord and leave you. So see that your greed has led you to what? So liars, stop giving them the historic facts which are lies. Jerusalem does not belong to you. Jerusalem belongs to Islam, to Muslims. And the holiest mosque there where the people, all Muslims of 1.9 used to pray, is the Al-Aqsa Mosque. And who walked the shoes in there, you can see his body for 8 long years was on life support, was liquefied. There was nothing. The smell, the dirty smell of the Ariel Sharon was smell. And so what he was buried there was nothing, no flesh, no nerves, no veins, only liquid, dirty liquid like a pus, filth, and fecal matter. Then that's what was buried. And this is what is going to happen to you, Natenyahu, and the grant as, and the Mangiver and Smotrich and all that hawks which you have with you, and they will be you. Now within a matter of another a year or so, there will be no, I think, nothing will be left. You will be defeated militarily, and not only Jerusalem, but all of the 99% of the, Palestinian state will be taken away from you and be occupied by Palestinians, which you throw it all over the world where the Palestinians are. They will return back, and you will have nothing. See what the greed has done to you. And if the Israelis don't wake up, or the Hardis don't wake up, or the people who are sane and living all around the world and are good Jews, they do not get this man arrested and handed over to International Court of Justice so that he rot there behind the bars and dies either natural death or is executed. Though I will have no hope. So with these words,
I will present some of the things which have happened recently, and you can see for yourself how close you are for your complete elimination and destruction. Qatar, which requires an Arab, Islamic, and international response to confront this aggression, and to take international measures to stop the occupying authority and deter it from its criminal practices that destabilize the security and stability of the region. We will stand with the sister state of Qatar in whatever measures it takes without limit, and we will dedicate all our resources. Therefore, we also condemn the continued brutal assaults on our Palestinian brothers in Gaza and the persistence in committing crimes of starvation and forced displacement. On behalf of my master, the custodian of the two holy mosques, may God protect him, I convey the same greetings. The second year of the 9th session of the Shura Council. We ask Almighty God to grant us success and make achievement our path, dear brothers and sisters. This state was established 3 centuries ago on firm principles based on the values of Islamic law, justice, and consultation. We take great pride in this blessed approach, and God has honored us with the service of the two holy mosques, a responsibility to which we devote all our care and attention, dedicating all our resources to it. Brothers and sisters, our economy continues to diversify its paths and affirm its ability to reduce its dependence on oil. For the first time in our history, non-oil activities have accounted for 56% of the GDP, which has reached levels exceeding 4.5 trillion riyals. All of this and other achievements have made the kingdom a global hub that attracts a wide range of activities. Perhaps the best evidence of this is that 660 global companies have chosen the kingdom as their regional headquarters, more than what was targeted for 2030. What has been achieved in infrastructure and the level of technological services reflects the strength of the Saudi economy and its promising future prospects, its vast potential. Within the framework of investments in future trends, the agreements that have been made in the field of artificial intelligence, complete aspects of the vision programs positioning the kingdom in the coming years as a global hub in this field. In our military programs, we are working to raise our defense capabilities to the highest global standards. In addition, our cooperation with our strategic partners contributes to achieving our goals of localizing and accelerating the military industry. This localization has now reached more than 19%, up from just over 2%. Dear brothers and sisters, the state recognizes that having strong public finances should not rely on a single source. Fluctuating revenues make it essential and fundamentally necessary to achieve development, economic diversification, and sustainability, through which diverse job opportunities can grow. Since the launch of the vision, the state has worked to build this foundation, which has given our country a robust economy and made it an attractive destination for investment, as well as achieving many of the goals we strive for. Among these achievements are the unemployment rate reaching its lowest levels and the increase in women's participation in the labor market, as well as maintaining its levels and reducing the proportion of those with limited income. In this context, we continue to assess the economic and social impact of public spending to ensure that resources are directed toward national priorities. This is part of our ongoing efforts to serve citizens, increase their income, raise the level of services provided, and improve the quality of life for citizens, residents, and visitors. The strong economic growth that the kingdom is experiencing today has been accompanied by a rise in residential real estate prices in some regions of the kingdom to unacceptable levels, which has led to some distortions in the sector and caused the average cost of housing to rise relative to citizens' income. This necessitated the development of policies to restore balance to this sector, reduce real estate costs, encourage investment in real estate development, and provide a variety of suitable options for citizens and investors alike. The previous phase has demonstrated the capability of both the public and private sectors in facing challenges and quickly adapting to changing circumstances. The quality of government performance has also played a prominent role in absorbing economic shocks and in the flexibility to review and adjust the course and components of programs so that they become more resilient to any fluctuations without disrupting development requirements. The public interest is the highest goal we seek to achieve through these targeted programs. And God willing, we are determined and have the strength to achieve and complete them. However, we also affirm that we will not hesitate to cancel or make any fundamental changes to any program or target. We are mindful that the public interest comes first. Brothers and sisters, our achievements. Domestically, we are moving forward alongside our efforts to achieve security and stability in the region, and we reject and condemn the actions of the occupying authority. Of Israel in the region, the latest of which is the brutal aggression against the sister state of Qatar, which requires an Arab, Islamic, and international response to confront this aggression, and to take international measures to stop the occupying authority and deter it from its criminal practices that destabilize the security and stability of the region.
We will stand with the sister state of Qatar in whatever measures it takes without limit, and we will dedicate all our resources. Therefore, we also condemn the continued brutal assaults on our Palestinian brothers in Gaza and the persistence in committing crimes of starvation and forced displacement. The land of Gaza is Palestinian, and the right of its people is inalienable. No aggression can take it away, and no threats can nullify it. Our unwavering stance is to protect this right and to work seriously to prevent its violations. The Arab Peace Initiative, which the Kingdom launched in 2002, and which we have. By activating it internationally through the perspective of the two-state solution, it now represents an unprecedented path toward achieving a Palestinian state. The Kingdom's intensive efforts have resulted in an increasing number of countries recognizing the state of Palestine and its rightful claim, the International Conference to implement the two-state solution in New York, an unprecedented mobilization that strengthens the consensus among nations to implement this initiative. And as we thank all the regional and international partners involved for their effective humanitarian contributions, and we reiterate our call for other countries to participate at this stage. Regarding the Syrian issue, the Kingdom has taken pivotal positions and implemented multiple initiatives, starting with the successful lifting of international sanctions on sisterly Syria, supporting its efforts to ensure the unity of its territory and rebuild its economy, and we hope that stability will be achieved. In Lebanon, Yemen, and Sudan, brothers and sisters, the Shura Council has a clear mark and an important role in the achievements being realized through their contribution to developing regulations, completing and updating the legislative system so that our country stands among the most advanced nations legislatively. In conclusion, we would like to point out that all our efforts and aspirations are centered on the dignity. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात